ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः. In this Panchakosha Vichara, first it was told that the Atma cannot be this body in few slokas. Now the set of slokas we are studying, there we are seeing that how this body cannot be Atma. पहले हम लोग देख रहे थे कि आत्मा ये शरीर नहीं हो सकता. अभी जो चल रहा है उसमें क्या बोल रहा है कि शरीर आत्मा नहीं हो सकता. ये 161 नंबर जो श्लोक, अत्रात्म बुद्धि त्यज मोह बुद्धि त्वक माम सदेह अस्ति पुरीशराशो सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कुरुष्व शांतिम परमां भजस्व. भगवान शंकराचार्य जी एकदम मूढ़ बुद्धि ऐसे करके हम लोगों को इन्वोक कर रहा है. इन भज गोविंदम also we have seen भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते. डांट रहे हैं हम लोग को, लेकिन बहुत प्यार से, because he knows that how we are identified and attached with the composition of inert filth. Composition of inert filth. भगवान बोल रहे हैं कि इस भावना की परिवर्तन आत्म बुद्धि आत्मा में शिफ्ट करो and attain the supreme bliss, परम आनंद, परम शांति लाभ करने का यही उपाय है. ये देह आत्मा है, ये देह मैं हूं. ये जो भ्रांत धारणा है इसको त्याग करने के लिए भगवान पहले समझाया, उसके बाद रिक्वेस्ट किया, अभी डायरेक्टली डांट रहे हैं. ये शरीर अन्न के सिवा और कुछ नहीं. इसलिए 154 नंबर 154 नंबर श्लोक में how this body is the transformation of food ये समझाया गया. At night I eat something and that amount of food within a few hours becomes Divagar. ये जो एकत्व, जब अहम ब्रह्मास्मि मतलब पूरा जगत में सिर्फ एक ही आत्मा है,
ये सिर्फ आध्यात्म विद्या में नहीं, बल्कि जो जड़ विज्ञान है, जड़ विद्या है, उसमें भी है। जब तक हम लोग इस विश्वास में, भावना में, चिंतन में स्थिर हो सकता है कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ये पूरा जगत चैतन्यमय है, जब सारे व्यक्ति को अपना सकता हूं, व्यक्ति के रूप से नहीं बल्कि आत्मा के रूप से, तभी परम शांति मिल सकता है। परम शांति मिलने की एक ही उपाय है, एक आत्मबोध। एक आत्मबोध। There is no difference between me and a tree and any sorts of animals. Mostly, there is no difference between me and my neighbors. My disturbing neighbors and me both are same from the standpoint of Atma. This is the Ekatmabodh. And that is the only way to get eternal happiness and peace. This sort of universality, एकत्व बोध, सिर्फ अध्यात्म विज्ञान की विषय नहीं, बल्कि जड़ विज्ञान का भी विषय है। इस अस्तित्व में, इस जगत में everything is interconnected. Each and everything is interconnected. बहुत दूर में जो नक्षत्र पुंज है और इस पृथ्वी में कोई फर्क नहीं। हजार, लाख, करोड़ किलोमीटर दूर में अगर कोई नक्षत्र में कुछ हो रहा है तो उसकी प्रभाव पृथ्वी में हो रहा है। पृथ्वी में कुछ हो रहा है तो इसकी प्रभाव कोई दूर नक्षत्र में हो रहा है। तांजानिया में एक लेक में हिपोपोटामस हुआ करता था, जलहस्ती। तो उधर का जो उपजाति है वो तो मांसाशी था, शिकार करके अपना आहार जुगाड़ करते। तो वर्षा वगैरह से बहुत कष्ट करके वो लोग कोई जलहस्ती को मार सकता था। एक दिन उन देश में ब्रिटिश आ गया and they gave them the gun to kill the hippopotamus. And very easily they started killing hippopotamus. हिपोपोटामस कहाँ पर रहते थे? जो तांजानिया के लिए बहुत मशहूर नदी था, उसमें वो लोग रहते थे। अभी हिपोपोटामस बहुत कम हो गया, लगभग ना की बराबर। प्रॉब्लम क्या हुआ ना? हिपोपोटामस एक दिन में करीबन 1 से 2 क्विंटल घास खाते थे जो नदी में उगता था।
अब नदी में घास बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते नाव चलना भी बंद हो गया। हिरन बढ़ गया, लेकिन कुछ ऐसे मछली था जो नदी की स्रोत में रहते थे, इसलिए उधर का पूरा इकोलॉजी डिसबैलेंस हो गया और हिरन का मात्रा इतना बढ़ गया और हिपोपोटामस कम हो गया। Then the scientists started thinking what to do to reback that ecological system. They brought some hound and hyena from different places to maintain the ecology. So in this whole universe, everything is interconnected. We think that it's only our spiritual language. We say, Sarvam Khalvidam Brahman, everything is Brahman, everything is one. No. In physical science also, they proclaim that everything is one. Acharya Jagadish Chandra Bose, he proved when they chemically started analysis, जब सारे कोष, ये पत्ता, ये चमड़ा, जब इसको तोड़ने लगा, देखा कि सबकी जड़, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो सब में एक ही है। One famous mathematician called Pierre de Fermat, उन्होंने बताया कि पूरा जगत, the whole universe, it is bound in one thread. Each and everything affects and affects. उनका एक सूत्र था, वो है, the path taken by a light ray in going from one point to another through any set of media is such as to render its optical path approximately equal to other paths closely adjacent to itself. Spiritual log, religious log, the path taken by a light ray in going from one point to another through any set of media, means it may be air, space, water, any set of media, is such as to render its optical path equal to other paths closely adjacent to each other. Means जब पानी में लाइट बह रहा है या स्पेस में या किसी भी माध्यम में, it's our illusion. We are thinking that the light rays, suppose मार्बल में भी आप टॉर्च देंगे ना, तो इधर मारेंगे तो उधर लाइट दिखाई देगा. That is the पहचान of actual marble stone.
I don't know whether you know or not. If there is a beam of one marble, actual real marble, and if you light a torch in one end, in another end, the light will be visible. So any medium the light goes, we think there is the variation of medium, but with the scientific measurement, he tried to show that almost all the medium are same. Medium are same. The pathway of light are same. Only it may be stone, it may be water, it may be, but the pathway with the equation he tried to show that they are same. Like, a wheel, all the spokes are there, but all the spokes are connected with the hub. If the hub is not there, then there is no existence of wheel. Wheel means there should be a hub. And that hub here is Brahman or Atma. When everything is interconnected. Here means in our spiritual discussion in the श्लोका, इस विश्व में सारे के सारे वस्तु ब्रह्मन में केंद्रीभूत है। जब हम लोग खुद को ब्राह्मण के रूप से अनुभव करना सीख पाऊंगा, तब ये एकात्म बोध जगता है। तभी परम शांति की अनुभव होती है। और इसके लिए आत्मा की अपरोक्ष अनुभूति की जरूरत है। प्रत्यक्ष रूप में आत्मा को अनुभव करना। सिर्फ पांडित्य में कुछ नहीं होता। You can read, write a lot of Vedanta books also. You can be a speaker of Vedanta, but Vedanta Vadi or Vedantin is something different. So from a reader to practitioner, that transformation is needed. Not only mere studying, you have to practice Vedanta in your own life. We are studying, we are teaching that Sarvadharman Parityajya Mamekam Sharanam Vraja. In one slok, day after day we are giving talk. Everyone is clapping. Oh, कितना पढ़े है आप स्वामी जी, बाप रे, कहाँ से रेफरेंस लाते। And in my personal life, I'm suffering from anxiety and depression. Because what I'm preaching, that I don't believe fully. What I'm preaching, that I'm not practicing. In my personal life, I think I do that. If my everything is finished, how I will survive? How I will live? And at the time of taking class
और लोगों को जब बोलते हैं तब देखो भगवान ने क्या बोला, योग क्षेमम वहाम्यहम। But in my personal life, every time I'm suffering from anxiety and depression, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? That hypocrisy makes us mentally sick. The spiritual life is absolutely personal life, the life of practice. It is not the life of teaching. People will learn from me automatically. Life reflects. When the flower blooms, it never calls the bees and others. Likewise, if we practice the truth of Vedanta, what we study, what we listen to, what we preach others, we need to practice it in our life. देहेन्द्रियादावसति प्रमोदिता विद्वान् हन्ता न जहाति यावत् तावन्न तस्यास्ति विमुक्तिवार्तापि अस्त्वेष वेदान्त नयान्तदर्शी देहेन्द्रियादावसति भ्रमोदिता विद्वान् हन्ता न जहाति यावत् तावन्न न स्यास्ति विमुक्तिवार्तापि अस्त्वेष वेदान्त नयान्तदर्शी। विद्वान मतलब वेदांत की विज्ञान। He has done masters, PhD, postdoctorate in Vedanta. ऐसे भी कोई कोई व्यक्ति थे, मैंने पढ़ा है, कोई गुरुजनों से सुना, वेदांत के ऐसे ऐसे पंडित हुआ करते थे, जब जाते थे कहाँ किसी जगह पर तर्क करने के लिए, 11-12 bullock cart with the full of Vedantic books for the reference, and everything, most of them were by heart by this fellow. और उनका इतना बड़ा बड़ा डिग्री हुआ करता था, महामहापाध्याय वेदांताचार्य वेदांत केशरी, ये सब। लेकिन उन लोगों का नाम आज नहीं है। नाम तो है भगवान शंकराचार्य जी, निगुड़ानंद सरस्वती, चिन्मयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद पुरी, स्वामी अभेदानंद पुरी, स्वामी अखंडानंद सरस्वती। जिन लोग इतना पढ़ा नहीं, पढ़ा तो बहुत कम उन लोगों से, लेकिन पूरा के पूरा अभ्यास किया श्रद्धा और विश्वास के साथ। पूज्य चिन्मयानंद जी
जीवित है और जीवित रहेंगे हम सबों के दिल में, उनकी अनुभव के लिए जो अभ्यास से आता है। उनसे बहुत बहुत ज्यादा पंडित लोग उनके पास थे। विद्वान असति देह इंद्रिय आदौ, ये जो है ना, देहेन्द्रियादावसति मीन्स देहेन्द्रियादौ असति, अस धातु। तो असति देहेन्द्रियादौ, ये मिथ्या देह इंद्रिय, इनमें प्रवृत्ति में भ्रम उदिताम, ये मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न हुआ अहमताम, मैं इस ज्ञान को यावत, जब तक न जहाती, त्याग नहीं करते, तावत, तब तक, तस्य, उनकी, विमुक्ति वार्ता न, मुक्ति लाभ की सवाल ही नहीं। अपि, फिर भी, एषः वेदांत नयांतदर्शी अस्तु, ये व्यक्ति वेदांत की पंडित हो सकता है, न्याय की पंडित हो सकता है, व्याकरण की पंडित हो सकता है, लेकिन मैं ये शरीर हूं, ये भावना जब तक नहीं जाएगा। पैसा कमा सकता है, नाम कमा सकता है, लेकिन शांति तो नहीं मिली। दो तीन मोटिवेशनल स्पीकर who are having few millions followers in YouTube. One of them is in hospital right now in Bangalore for anxiety and depression. But they are motivational speaker. Few million followers. Not 1, 2, 3, 4 or 1,000 like. Preaching and practice. Preaching चाहे नहीं हो सके, लेकिन प्रैक्टिस का विकल्प नहीं, अभ्यास की विकल्प नहीं। अभ्यास ही न तो काउंटे। There is no liberation for a man of mere book knowledge, even if he is very well read in the philosophy of Vedanta, so long as he does not give up his false identification with the body, sense organs, and so on, which are unreal. Avidya or spiritual ignorance is the cause of one's delusory identification with the matter, vestures, and the effect of this identification is bondage. Unless the cause is removed, the effect cannot be removed. Again, I am repeating,
unless the cause is removed. The effect cannot be removed. To see a thing as something other than what it actually is called delusion or Brahma. From the standpoint of Brahman, the body and the sense organs do not exist at all. Do not exist at all. It is possible to gather from the study of Vedanta that there is Atma, which is the absolute and ultimate reality, which is something other than the body, the sense organs, and so on. But it is not possible to have the experience of truth unless one completely, subjectively ends the identification with the body. Here, neither can there be any help from the sacred scriptures, nor from the teacher. At this point, it is to be carefully noted that what is to be given up is the identification with the body, and not the body itself. As long as this identification remains, there will not only be no experience of the Supreme, but there cannot even be a talk of liberation. One will be nowhere near the self if this body identification persists. ज्यादा से ज्यादातर लोग खुद को ये शरीर मानता है। जब तक ये भ्रम रह जाएगा, तब तक मुक्ति लाभ, मोक्ष की कोई सवाल ही नहीं उठता। चाहे वो वेदांत की, न्याय की बहुत बड़ा पंडित हो सकता है, लेकिन जब तक ये देह और इंद्रिय में मैं की बोध है, तब तक मुक्ति ही न भजति न सिद्धति। मुक्ति लाभ करने के लिए खुद को ये जो शरीर का जंजीर है, इस भावना को तोड़ना पड़ेगा। शरीर को तोड़ने का जरूरत नहीं, लेकिन मैं ये शरीर हूं, ये जो बद्धमूल धारणा बहुत सारे जिंदगी से, we are carrying it from life after life. So many past lives we are carrying. That we have to break. Two, three drunken people after a drinking party in one island, they started going back to their own island. Whole night they rode,
And in the morning, they realized that whole night they did a laborious job, but not a single inch they could go forward, because there was the anchor. What they did not lift could not lift. अगर देह अभिमान की ये नोंगर, ये एंकर हम लोग उठा नहीं सकता, जितना भी किताब पढ़ो, जितना भी जप करो, जितना भी तप करो, जितना भी दान करो, जितना भी जो भी कुछ करो, जितना भी पढ़ो, मैं ये शरीर हूं, ये नोंगर को आप नहीं उठा सकता, क्योंकि मैं देह, यही, दिस इज द एंकर. Whatever the spiritual practices, how much you can study. Unless and until you lift up that anchor, moksha is not possible. Liberation is just impossible. और जब ये अहम देहाभिमान, जहां से सारे अभिमान की जो जड़ है, ये देहाभिमान है, इनको जब उठाना चालू करते हैं, तब हम लोगों का संप्रसारण चालू हो जाता है. That is called expansion of life. तब दूसरे के लिए प्रेम, सहानुभूति जगता है. तब मन में आता है ये विश्वास कि मैं कुछ नहीं करता, मैं सेवा नहीं करता, मुझसे करवा जाता है, मैं किसी को दान नहीं दे सकता है जहां पर मेरा कुछ नहीं है. Not a single things belong to me. How can I give donation and charity? भगवान की अशेष कृपा है मुझ में, जो वो मुझसे करवाते हैं. स्वयं भगवान को भी नींद से जागने का शक्ति नहीं, अगर परमा प्रकृति उनमें उस शक्ति डाले तो. चंडी में तो हम लोग यही देखा पहला चैप्टर में. जब तक मन से अहं बुद्धि चला जाएगा, तब सेल्फिशनेस, खुद के लिए सुखानुभूति, सुख साच्छंद थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा. We can think for others. In the mission also you will see a lot of people, they are connected with the mission for a long time and they claim, for this many decades I am with the Swamis, with this Swami, with this Swami, with this Swami, with this Swami. And if any ceremony happens, they bring their tiffin box and everything else. I have noticed it.
They are ready to take away not the message from here, but the food stuff over here. They never think for others. जितने सारे लोग हैं सबको मिल रहा है या नहीं, मेरे जाने के बाद भी कहीं लोग आ सकता है इधर। बोलना आसान है, अभ्यास करना दिक्कत की बात है। नाम के लिए दान होता है। कोई कोई व्यक्ति है, उस दिन भी आए थे 2-3, भूमेंद्र ने बताया, ये अम्मा बहुत सी छोटा सा था, ये देके गया और बोला इधर रखो। कोई अम्मा कुछ सामग्री, 2-3 अम्मा। I was surprised. Nobody knew except the staff and me how cautious they were, that nobody should know. Practice. Think about their spiritual elevation and result they gave. Result in the form of mental peace. And that's the success of our life, spiritual life. We try to, we are ready, we are trying a lot to show our spiritual life. How much spiritual I am. See, was like that. Consider me as a spiritual person. See my ochre robe. See my long hairs. We should ask ourselves, शांति के साथ कंप्रोमाइज तो नहीं कर रहा हूं, खुद को चीटिंग तो नहीं कर रहा हूं, इसमें से टाइम तो नहीं गुजर रहा हूं ये प्रमाण करने के लिए मैं जो नहीं हूं। This self-introspection is needed in spiritual practice. We can't cheat anyone else other than ourselves. This is the ultimate realization in life. Now I can remember my childhood. You know, my father used to say, "Kaho ke phaki dite parbe na baba, nije phakite pore jabe." In your life, just try to analyze your past event, past life. Think, किससे छुपाओ? खुद से तो छुपा नहीं सकते। वेदांत न्यायदर्शी। और इस भावना से क्या होता है? अल्पात्मा महात्मा बन जाता है। अल्पात्मा महात्मा बन जाता है। अल्पात्मा मतलब देह अभिमानी व्यक्ति। आज उनके अंदर से महात्मा की पैदाइश ही होता है।
जिनके हृदय में दूसरे के लिए खून बहते हैं, who feels for others. Swami Vivekananda used to say that I only call him Mahatma जिनके हृदय दूसरे के लिए रोते हैं, बाकी सबके सब दुरात्मा है। स्वामी विवेकानंद ने बताया that only two people, Mahatma and Duratma. I think this is enough for today's class. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnanadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Sri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.